Hello beauties, what's up and welcome back to my channel. I hope you all guys are fine. So let's start with the video. शुरू करते हैं. So first मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र. So मॉइस्चराइज़र आई एम यूजिंग इज़ अ बॉबी ब्राउन. आप चाहो तो अपना जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स का हो गया अगर आपका ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, आपका कोई सा भी थिक बेस क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र है आपके पास, वो आपका ड्राई बेस का मॉइस्चराइज़र है. तो ये मैंने बॉबी ब्राउन का मॉइस्चराइज़र लगाया है, प्राइमर. सो मेकअप सेट करने से पहले प्राइमर एक बेस होता है जो होना बहुत ज़रूरी है. मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेबेलिन का, आप देख सकते हैं ये मेबेलिन का प्राइमर है. दिस इज मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर. दिस इज नॉर्मल टू ऑयल. I am using a L'Oreal. So this is L'Oreal Infallible Concealer. This is a full coverage concealer. As you can see guys, ये मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स है उसको थोड़ा सा हाइड करेगा. That's it. अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप कलर करेक्टर यूज़ करिए, बट मैं सिर्फ एक सिंपल लुक कर रही हूँ. दैट इज आई एम जस्ट यूजिंग कंसीलर. अगर आप हैवी बेस वैसे करते तो आप कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट यूजिंग कंसीलर एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद ब्यूटी ब्लेंडर. तो आप देख सकते हैं ये कंसीलर मेरा फुल कवरेज है. सो मुझे फाउंडेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम कीपिंग सिंपल. तो मैंने सिर्फ कंसीलर यूज़ किया है एंड द कंसीलर है वो मेरा फुल कवरेज है. आप देख सकते हैं ये पूरा कवर कर लिया अच्छे से. एंड देन आफ्टर यूजिंग कंसीलर आई विल सेट इट विथ अ पाउडर. सो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी ट्रांसलूसेंट पाउडर. आप या तो कोई भी बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं. मैं के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ. सो दिस इज़ के ब्यूटी ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर. ओके आप देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द पफ दैट इज़ from pack. I'm setting and then after setting it मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लश, ज़्यादा नहीं बहुत. ब्लश आई एम यूजिंग इज फ्रॉम माई ग्लैम एंड दिस इज द ब्लश यू कैन सी. सो लेट्स सेट इट. वेल द शेड इज लिटिल पीच वन. आप या तो पिंक यूज़ कर सकते हैं बट मैं एकदम सिंपल रख रही हूँ. सो आई एम यूजिंग अ पीच एंड आई एम लिफ्टिंग इट. बस यही, नॉट ऑन माई नोज एरिया, ओनली माई चीक एरिया एंड आई एम जस्ट लिफ्टिंग. देन आफ्टर दैट आई एम यूजिंग लिटिल ब्रॉन्जर. आई एम यूजिंग इज फ्रॉम द balm. After that I am using little brown tone eyeshadow. The eyeshadow I am using is from purple. आप देख सकते हैं शेड्स इसमें थोड़े से ब्राउन है, पर्पल है, पिंकिश है. Then I am using only brown. That's it. So let's start. This is my eye look. फिर आई लुक करने के बाद मैं थोड़ा अपना ब्राउज सेट करूँ, सिंपली सेट करूँ क्योंकि मेरे ब्राउज ज़्यादा भरे हैं. सो आई एम नॉट लाइक ब्रशिंग इट अप एंड एनीथिंग. सो मैं बस एक फिक्सर से सेट कर रही हूँ एंड द फिक्सर आई एम यूजिंग दैट इज़ फ्रॉम टू फेस. दिस इज़ फ्लफ एंड होल्ड. दिस इज़ लुमिनेटिंग ब्राउ वैक्स. तो मैं सिर्फ सेट कर रही हूँ. आप या तो ब्राउ वैक्स जो है वो खुद बना सकते हैं घर पे या तो आप खरीद सकते हैं. आफ्टर सेटिंग माई ब्राउ वैक्स आई डू माई लाइनर. सो लाइनर में यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का. इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छे से आती है. सो आई प्रेफर लिक्विड लाइनर. आप या तो पेन लाइनर यूज़ कर सकते हैं लैक्मे का, बट आई प्रेफर लिक्विड वन.
my liner is done. And it's so sharp and perfect. My liner is done. After doing my liner, I'll do my under eyes here. So I'll put kajal and I'm using that is of K Beauty. वेल आप कोई और सा भी काजल यूज़ कर सकते हैं, लैक्मे का है, मेबेलिन का है, जो बहुत अफोर्डेबल है. आप आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग मस्कारा. Mascara I'm using is of purple. So my mascara is done. Now the most important part is lips. So lips आप कैसा चाहते हैं, bold, nude, कैसा. So मैं यूज़ करूँगी ombre lips. तो ombre lips कैसे होते हैं, first we have to outline, then उसके बाद inner अलग होगा. Let's start with it. So first मैं lip liner यूज़ कर रही हूँ, that is from Inside and the shade is little dark pink. सकते हैं मैंने ये पूरा आउटलाइन कर दिया है. नाउ आई लाइट शेड दैट इज फ्रॉम मेबेलिन. दिस इज अ सॉसी वन. Step is the highlighter. So highlighter I'll be using of Rare Beauty. आप कोई और सा भी यूज़ कर सकते हैं, या कि आप मेबेलिन का यूज़ कर सकते हैं, आप पर्पल का यूज़ कर सकते हैं. मैं अपना वन फेवरेट हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम Rare Beauty हाइलाइटर एंड द शेड इज एनलाइटन. द टेक्सचर इज एंड लेट मी शो यू गाइस. Just a little dab. That's it. Here also. And then here also, just see the glow. Wow, I'm so impressed. Then I'll be putting in my inner corners too. Let's see. Then on the other side also. This is my look, guys. I hope you really like this look. Well, do comment me in the comment section and tell me how is it. Well, if you like this video, so please like, comment, share with your family, friends, and if you guys haven't subscribed to my channel, so please do subscribe to my channel, and more videos are coming on, so stay tuned. Bye.